guys, welcome back to another tutorial session of Champion Competitor. Today we are going to study Central Council of Ministers according to the MCQ based examination. So let's start. The Council of Minister, let me choose a pen. Okay, the Council of Ministers headed by Prime Minister is the real executive authority in our politico-administrative system. That means the Council of Minister plus Prime Minister, they take all the executive functions. So they are real executive authority who actually perform all the things which were taken in the legislative part. So all those decisions, they are implemented by them. As such, constitution doesn't deal in much detail about the status of Council of Minister, their appointment and other things. But the Article 74 and Article 75, they deal with them. We'll study them in detail, but first let's have a brief review what these articles says. Article 74, it talks about the status of the Council of Minister. What is their status? And Article 75, it deals with the appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salary and allowance of minister. Okay, so in upcoming slides we are going to study these two articles in detail. Let's start with Article 74. Article 74, what does it says? It has two parts actually. The first part says that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise. This is a very important, these two words are very important, aid and advise. So they are there to aid and advise the President, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice. And President cannot do anything which is not advised or aided by the Council of Minister headed by Prime Minister. So whatever the council headed by Prime Minister says, the President is required to do so. Provided that the President may require the Council of Minister to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Sometimes what happened that the President says to the council that you please reconsider the advice you are giving to me, and even if after the reconsideration the advice is same or maybe there are some changes in the advice, the President has to follow it. Okay, तो President को वो follow ही करना पड़ेगा. The second part, the question if any and if so what advice was tendered by ministers to the President shall not be inquired in any court. और जो ministers हैं या फिर जो Council of Minister जो भी advice President को करता है, उस advice को किसी भी कोर्ट में ले जाकर उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते. So they are not questionable in any court. Okay, so Article 74, very important article. It deals with what is the responsibility of Council of Minister. They have to aid and advise the President. Okay, so यहाँ पर take home message is that Council of Minister headed by PM is there to aid and advise the President. Okay, and that advice cannot be inquired into any court. Okay, so this is about Article 74. Now this is Article 75.
First point of Article 75, what does it say? It says that the Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister. If you have seen my previous video on Prime Minister, there I have talked in much detail about how the Prime Minister is appointed and how other ministers are appointed on the recommendation of Prime Minister to the President. So Article 75, actually the first point of Article 75 tells you how Prime Minister and these ministers are basically appointed. So they are appointed by the President, and I have also already talked about that President cannot appoint anyone if he wish to. He has to appoint that member as the Prime Minister who has secured majority vote in the Lok Sabha election. So leader of the majority party in Lok Sabha has to be the Prime Minister, and whosoever he recommend are going to be the member of council. These ministers, they hold office during the pleasure of President. So their time period, it is parallel to the tenure of President. These ministers, they hold their office during the pleasure of President. Third, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Okay, so they are together responsible to the Lok Sabha. The President shall administer to him the oath of office and secrecy of secrecy to the minister. A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be minister. This ये भी मैं पहले जो प्राइम मिनिस्टर वाला पार्ट है उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल of minister, then you have to be a member of either of the house, either it be Lok Sabha or Rajya Sabha. And if after 6 consecutive months you are not a member of any house of the parliament, you cease to be the minister. Okay. The salary and allowance of ministers shall be such as Parliament may from time to time by law determine, and until Parliament so determines shall be as specified in the second schedule the Attorney General of India. Total number of ministers, including the PM in the council, shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. तो जितना भी लोक सभा में मेंबर्स होंगे, आगे हम पार्लियामेंट डिटेल में स्टडी करेंगे कुछ आने वाले टाइम में, तो पार्लियामेंट में हम देखेंगे कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए, राज्यसभा में कितने मेंबर होने चाहिए स्ट्रेंथ. तो उस स्ट्रेंथ पर ये डिपेंड करता है कि उसके 15% मेंबर्स ही यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो सकते हैं. Any member of parliament is disqualified due to defection is also ceased to be a minister of council of minister. This part, defection, under 10th schedule, we are going to take it in detail in upcoming videos of parliament. There also I have discussed 10th schedule in bit detail. So वहाँ पे भी मैं कवर करूंगी. अभी थोड़ा ब्रीफ में यहाँ बता देती हूँ कि इफ अ मिनिस्टर इज डिसक्वालिफाइड अंडर 10th शेड्यूल के अंदर अगर वो डिसक्वालिफाई होता है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर भी नहीं बना सकते हैं. ओके, so this is about article 74 and article 75. Okay, up let's move on to the composition of council of minister.
Council of Minister is formed of three part, you can say. The first part, which is the most important part, is the cabinet ministers. The second in rank are ministers of states, and third in rank are deputy ministers. Let's look at them in detail. Okay, the cabinet minister. Cabinet minister, they are second in place in council after prime minister. So in council of minister, the first position is of, you can see this is PM. The first position goes to PM. The second position goes to the cabinet ministers. They head important ministries of the central government. The member of cabinet, they attend all the meetings of cabinet and they have important role in deciding the policy. So this is about cabinet ministers. The second one are ministers of state. Minister of state, they function in two ways. Either they are given independent charges, or attached to the cabinet ministers. Now when they are attached to the cabinet minister, they can again function in two ways. They can be given charge of the department of ministry headed by cabinet minister, or they can be allotted specific items of work related to the ministries headed by the cabinet. ओके तो एक बार हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक चार्ज दे दें कि आप इस स्पेसिफिक काम को करें, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक आइटम उनको अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन दोनों कंडीशन में दे आर हेडेड, दे आर गाइडेड, सुपरवाइज बाय द कैबिनेट मिनिस्टर. इन दोनों केसेस में व्हेन दे आर अटैच्ड, इन बोथ दीज केसेस दे आर सुपरवाइज एंड गाइडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर. And when they are assigned independent charge, they have same power and functions as cabinet minister. They do not attend the meetings of cabinet, but when a special invitation is given to them, they attend the cabinet meeting. So normally they don't attend the cabinet meeting. बट अगर कोई उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लेना है तो ऑब्वियसली उनको स्पेशल इनविटेशन दिया जाता है कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने के लिए. ओके, द थर्ड इन रो इज डेप्यूटी मिनिस्टर्स. डेप्यूटी मिनिस्टर, दे आर नेवर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज. दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अटैच टू अ कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो अपने ऊपर वाले जो टू लेवल्स हैं उनमें से किसी एक के अंडर वो अटैच्ड रहते हैं. दे आर नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड दे डू नॉट अटेंड इट्स मीटिंग. तो इनको तो स्पेशल इनविटेशन देकर भी मीटिंग में बुलाया नहीं जाता. तो इस स्लाइड में टेक होम मैसेज क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है. कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर सेकंड प्लेस में है. अगर हम काउंसिल हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड पोजीशन पे कैबिनेट मिनिस्टर है. इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इनके अंडर होते हैं, कैबिनेट के इंपॉर्टेंट रोल्स ये लेते हैं, ठीक है, और कैबिनेट मीटिंग भी अटेंड करते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ काम कर सकते हैं या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर अटैच होकर के काम कर सकते हैं. जब अटैच होते हैं तो उस कैबिनेट मिनिस्टर की सुपरविजन और गाइडेंस के अंदर काम करते हैं, और जब इंडिपेंडेंट चार्ज होता है तो सेम पावर और फंक्शन मिलती है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को होती है. ये भी कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, पर जब इनको स्पेशल इनविटेशन मिलता है तो ये मीटिंग अटेंड करते हैं.
डिप्टी मिनिस्टर हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर अटैच होकर के काम करते हैं, कैबिनेट का पार्ट नहीं होते हैं और कब कोई भी कैबिनेट की मीटिंग ये अटेंड नहीं करते। ओके, सो टेक होम मैसेज इज क्लियर आई थिंक। लेट्स प्रोसीड। ओके, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बिकॉज इस स्लाइड में से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। ये कुछ 8 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो इस पार्ट में से जो भी एमसीक्यू आएगा यू विल बी इजीली एबल टू टिक दैट। ये जो स्लाइड है एक्चुअली डील करती है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इट इज अ वाइडर बॉडी, क्योंकि अभी हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखा कि 3 मेंबर्स होते हैं, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो ये एक वाइडर बॉडी है, 60 to 70 मेंबर्स तक इस बॉडी में होते हैं। जबकि आप कैबिनेट देखेंगे तो एक स्मॉल बॉडी है, सिर्फ 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये सारे मिलकर एक कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। It include all the categories of minister, whereas cabinet it includes only cabinet minister. So cabinet is a part of council of minister, you can say. Okay, council of minister they does not meet as a body, therefore they don't have any collective function, whereas cabinet they meet as body once a week and thus a collective function is performed by them. As such, council of member they are vested with all the powers, but in theory, practically जो भी major power है that is being exercised by the cabinet. Okay, council of ministers का function जो है determine करते हैं cabinet, और cabinet का क्या काम है? उनका काम है ये डायरेक्ट करना कि council of ministers they are doing according to the decisions taken by them. Okay, they implement the decision taken by the cabinet and they supervise the implementation of the discussion by the council minister. ये पॉइंट 7 ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिटेल में स्टडी कर भी चुकी हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये एक, जिसको आर्टिकल 74 और 75 में डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। जबकि कैबिनेट जैसा कुछ चीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जब हुई तो एक आर्टिकल 352 ऐड किया गया, जिसमें दैट ये ऐड किया गया। सो आर्टिकल 352 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, आर्टिकल 75 में हमने देखा था ये। वेराज कैबिनेट क्या करते हैं? दे enforces the collective responsibility of council of minister to the lower house. ये enforce करते हैं और ये होते हैं। Okay, so this is for it. I think you have gained something from the video. If you really think so, please subscribe to the channel, share with your friends and like it. Bye bye.